Cinema Media. I'm Sneha Kumari with you, and you're watching our Facebook Live session, Let's Talk Fitness with the most fittest couple in B-Town. For this session, we have the two most amazing personalities from Bollywood, the Mohabbatein girl Indian actress producer Preeti Jangiani and actor director Parveen Dabas. So we welcome you both on our show. Mohabbatein, we call her the Mohabbatein girl of Bollywood, and Parveen sir is the most fittest person I have seen in the Bollywood industry. So first of all, I would just like to start with how you guys are doing. कैसे हैं आप दोनों और कैसा चल रहा है? We're doing very well. Thank you so much. And thank you for your very, very kind words. Thank you. So that's Thank my you. pleasure, ma'am. Great to be on the show, and we're doing very well. Thank you. Okay, so okay, so this is very personal to me, I will say, because Preeti ma'am, looking at Preeti ma'am, like it's been a this just like a nostalgic moment, you can say, for me, because I have grown up watching your movies, and Mohabbatein is very close to my heart. Talking about Preeti ma'am, especially, you are the same. I mean, you were the same then, and you are the same now. Like, you were the same young, elegant, beautiful woman, like in Mohabbatein, and you are the same now. Like, you are as well a mother now, and you're so busy. You're working every day, and how do you manage yourself to keep yourself so well maintained? And what do you do? What is the secret mantra behind it? I could hear a little bit of your question because you're मैं breaking बताता up. हूँ आप इतना कुछ करते हैं वो कैसे करते हैं मैं पैराफ्राइज करता हूँ So thank you very much. And yes, I'm very fortunate that I had a film like Mohabbatein to start with, which so many people still love and still remember. And it's very nice to receive so much love and be and for your performance to be remembered after so long, after so many years. Yes, I'm a mother now, and but I think this is the story of any working woman or any working mother. We managed to do, I would say, woman power in this. We managed to do a lot of things and managed to multitask. So coming to your fitness routine, we have been seeing your videos on Instagram, on other social media platforms, and you inspire many people. So what are your fitness regime? Like, we are a health portal, and we would like to know we would like you people to aware people that what to do, what are your fitness regimes or diet plans which you follow in your normal life? What? I would like to say, I've always been very fit throughout my life because I've been a sports person. I'm doing all kinds of sports. I've been working out a lot. In between, there was a 3-4 year gap, जिसमें मेरा fitness ऊपर नीचे था. I had a bad back problem. I was gaining weight, then losing, then gaining again. So 3-4 years I did have a problem. So this time during lockdown, जब lockdown शुरू हुआ, मैंने कहा ये इसका मौका फायदा उठाते हैं इसको फायदा गलत वर्ड होगा क्योंकि लॉकडाउन काफी एक हार्श टाइम था सबके लिए लेकिन मैंने कहा जब घर पे रहना ही है तो उसको और वक्त है इतना सारा so let's get back our fitness so I started working out every morning so अभी एक साल होने वाला I have not missed even one day I work out 6 days a week और एक बहुत ही well known trainer है सोराब who has a company called SoFit. So I started doing उनके साथ मैं पहले भी workout करता था turf पे outdoor workouts, functional training. लेकिन उन्होंने ये लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए और वो मैंने हर दिन 8 से 9 सुबह I started working out online with him and a couple of other people and nutrition को भी थोड़ा सा नहीं काफी सही किया चेंज किया and मैं बॉक्सिंग भी करता हूँ मिस्टर त्रिदेव पांडे हम मेरे कोच हैं एंड उनके साथ वीकेंड्स पे उनके साथ बॉक्सिंग भी करता हूँ तो रेगुलरली अपना जो कह सकते हैं एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर किया और खाना पीना ठीक किया तो इन दोनों चीजों से आई रिग्रेन माय फिटनेस यू कैन से टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड अभी ये रहता है कि हमेशा की और कैसा चैलेंज कर सकता हूँ आई फील every day I try to challenge myself even more. Right. And ma'am, Preeti ma'am, what do you do? Like, it's very, inspiring to see you the same. You're still the same charming girl, elegant and beautiful like before. So, how do you what do you do? I think a lot of fitness or a lot of health
is Yes. I would say it's 80 to 90% what you eat. So, and I think in our Indian diet, we are very used to eating roti and rice, and we don't feel our meal is complete without eating roti or rice. Right. So, I think this is one thing that we need to change. Yeah. And I have tried many different kinds of diets. Like I had done a paleo for some time, and then we tried going vegan for some time and everything. Yeah. So I think I had come to the conclusion after all of this, and even during the lockdown, we did change our eating habits due to Parveen's actually exercise regime. He was Yeah. the one who actually took up this challenge to get fit, and so because we were trying to change the diet for him, automatically it changed for the entire family, really. And so we kind of changed, like instead of the regular rice, we only eat black rice and roti. Parveen hasn't eaten for a long time in any case, wheat roti. And I don't eat a wheat roti also either. We either have a multigrain, or we have a bajre ka roti or something. And and you do just like a meat or a salad, or just a salad, and so eat very less at night. So I would say a lot of my fitness is diet, and I believe that genuinely, that it's 80 to 90% what you put in your body. And of course, I cannot dispute the fact that exercise is very, very important. Daily exercise is something that we all need to do, not just for our regular fitness, but also for your mental well-being. Nobody can deny that after a round of exercise, or like a half an hour of jogging, or just even walking, it refreshes your mind, and you feel ready to start the day. Correct. So yes, Okay, regular exercise, any kind of exercise that works for you. It doesn't have to be one specific. Yeah. Yeah. So any particular your favorite exercises? Can we know about that? What do you like to do the most? And both of you, like one by one. Are you asking me or her, or both? So Parveen, so you can start. Okay. I used to really enjoy running also. I used to enjoy running quite a lot, and अभी भी मैं कभी-कभी दौड़ लगाता हूँ. But I love skipping as well. I feel skipping is something you can do anywhere, और skipping आप कहीं भी बैग में रख सकते हैं, कहीं भी skipping कर सकते हैं. और मुझे सीढ़ियाँ up down चढ़ना वो भी अच्छा लगता है, and बाकी sprinting करना भी अच्छा लगता है. Okay. Okay. And ma'am, what about you? So I do many different kinds of things. I think functional training is what I enjoy most. Yeah. Otherwise, I've tried yoga, and I think it works wonders, and it's almost a kind of strength training only. Yeah. And even just a regular walk works for me. Right. Walking is very important, which I feel like right now when you're working from home, and we don't get much time to like go out and walk. So थोड़ी सी भी अगर walking हो जाए तो काफी अच्छा better feel होता है. जी. So ma'am, okay, so we coming to your event which is going to happen on Sunday on 14th of February. Yes, I agree with you. Yeah. Yes. So coming to your coming to your event which is going to take place on 14th of February, Sunday, that is Pro Panja League. So Panja, we have heard. You're talking about your Pro Panja League, which event is going to take place on Sunday. So about that, we would like to talk to you about something like. अभी जैसे काफी हम देख पा रहे हैं कि पंचा is a sport which is not just considered to be a time pass in our country, not as a sport, like particularly sport, right? And you have given that new avatar to it by adding competitions for different people like women, men, children, and also the disabled this time. So tell me something about that. Like, tell us something about. मैं ये बोलना चाहूंगा, पहले तो कबड्डी को भी स्पोर्ट नहीं मानते थे. यही सोचते थे कि अपने गांव में खेत में खेलते हैं कबड्डी, पंजाब हरियाणा ऐसे. लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक ऐसा स्पोर्ट है जो देश भर में खेला जाता है, एंड काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एमेच्योर लेवल पे, ऑफ कोर्स अब प्रोफेशनल आए हैं. अभी सब इंडियंस वो देखते हैं. सो अपना पंजाबी यू कैन से उसी स्तर पर है.
जहाँ पे लोगों को लगता है कि ये यहाँ वहाँ खेला जाता है, बट एक्चुअली इसमें बहुत सारे एमेच्योर प्लेयर्स हैं जो यू कैन सी दे आर एक्सीलेंट, दे आर रियली गुड। स्टैंडर्ड इंडिया का बहुत हाई है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, एंड हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इतना बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म टू शो देयर स्किल्स। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वे ऑफ इनहैंसिंग फिटनेस ऑल्सो, क्योंकि अच्छा पंजा खिलाड़ी होने के लिए आपके अंदर ताकत तो होनी चाहिए, टेक्निकली स्किल भी होना चाहिए, और मेंटल एबिलिटी, मेंटल टफनेस भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्पोर्ट इंटरनेशनली भी खेला जाता है और बहुत ही बड़े लेवल पर खेला जाता है, इसके बहुत फैंस हैं स्पोर्ट के। तो इस स्पोर्ट का बहुत पोटेंशियल है कि ये इंडिया में ग्रो करे, और हमारे जो एथलीट्स हैं उनको वो पुश चाहिए, वो दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे नीड, दैट दे कैन रीच दैट लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और प्रो पंजाब लीग के वन ऑफ द एम्स इज दिस, to make sure that the athletes reach that level, and they're able to train and they're able to get that kind of support to reach that level. Correct. And was it the only concept behind it, or there was something different, like other than that, this also? This was a concept that Parveen thought of. Of course, it's a game that he loved and enjoyed in his childhood. I mean, he would tell you that. But this is something, forming it into a proper pro Panja league was a concept that Parveen thought of more than about 4 years ago. And we've been working on this since the past 4 years. Last year, हमने इसे launch किया था एक रैंकिंग टूर्नामेंट के साथ दिल्ली में त्यागराजन स्टेडियम में, जहाँ पे कबड्डी के मैचेस होते हैं। और श्री किरण रिजिजू जी आए थे और विजेंद्र सिंह जी आए थे, और उन्होंने इनॉग्रेशन किया था और मैचेस को लाइव पहली बार देखा था। जो पंजाब मैचेस होते हैं उन्होंने भी लाइव पहली बार देखा था, तो बहुत ही उन्हें पसंद आया और उन्हें बहुत थ्रिलिंग लगे मैचेस। So it as an audience member, they are quite thrilling and very exciting to watch. Yes, that's true, and we would love to watch it. Like I'll just follow that the event personally, and yes, definitely. So, ma'am, like coming to that, COVID is still there. So, what are the guidelines have you followed, or the protocols which are needed during for this? First of all, we had everybody tested before they even come. In fact, one official, he in his office somebody tested positive, so we told him to just quarantine and not come. So everybody else is coming tested. They're going to be kept then together in one hotel, safe like a bio bubble. And then even before doing a panja, the tables are going to be sanitized after every match. So we're really taking care that the conditions are sanitized and are good. Having said that, of course, अभी देश को almost एक साल हो जाएगा लॉकडाउन में, और काफी हद तक बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश ने इतने अच्छी तरीके से इस डिजीज का सामना किया है और कंट्रोल किया है उसको, जहाँ पे अभी उतने केसेस नहीं हैं जितने हो सकते थे पहले। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश ने इसको कंट्रोल किया है सेफ्टी मेजर्स के साथ, और हम भी काफी सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं सब खिलाड़ियों के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे अभी स्पोर्ट भी दोबारा एक साल हो गया स्पोर्ट के वे, so sport also has to start, but under certain safety conditions. Yeah. So, so as you being said that you are also you are into sports, and how much it is important for a person, like a sportsman or a person, to be physically fit plus mentally fit. How much it is important for a sports person to be mentally fit at the same time? जो दोनों हैं फिजिकली एंड मेंटल, वो साथ में जाते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते। देन क्या होता है, देन यू रिलाई ऑन स्टेरॉइड्स, एंड वो इंजेक्शन लगाते हैं लोग, एंड ये वो उससे कोई भी बॉडी बना सकता है। लेकिन एक्चुअली नेचुरल बॉडी बनाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है टू मेक अ बॉडी, जो 6 और 8 पैक हैं वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आ जाते, अलग तरीके से आते हैं ओवरनाइट, लेकिन मेहनत करके वो बहुत काफी टाइम लगता है। सो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी मेंटली फिट, बिकॉज जो न्यूट्रिशन है ठीक रखना, उसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ सामने आता रहता है, कभी कुछ केक, कभी कुछ चॉकलेट, कभी कभी खा लेना चाहिए, वो ठीक है, कभी 1-2 हफ्ते में 1-2 बार खा लिया वो ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी मेंटली स्ट्रांग नॉट टू ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस।
Okay, so and like for the budding arm wrestlers, like जो अभी arm wrestling में आना चाह रहे हैं जो बच्चे हैं, तो उनके लिए आपका क्या suggestion है? Like what they should like keep, you know, do to keep themselves fit, since like छोटे age से, or if they are wanting to come into this, what are your tips for that? See, there are a lot of arm wrestling exercises, अपने बाजू and shoulders and forearms को strong बनाने के लिए, fingers को strong बनाने के लिए, grip strong होना चाहिए. So there's a lot of exercises for that which can be found, and even leg strength, because इसमें टांगों का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, you know, hip strength. So you overall your body has to be very strong overall. ये सिर्फ हाथों का ताकत का खेल नहीं है, इसमें पूरा शरीर का इस्तेमाल होता है. So you have to be very strong overall. You have to do good basic exercises also, and complex exercises also. So you have to do a lot of different kind of exercises to maintain a lot of strength. You have to have the ability to lift a lot of weight also, because that is where a lot of strength comes from. So various exercises are there. So in this particular match, Yes. doing this Sunday on the 14th at the Pier Radio Club, इसमें ये एक मेगा मैच है जिसमें हमारे 18 champions compete करेंगे. So these are like a championship matches, and the winner will be called. The winner of the main match is going to be called Mega Champion, क्योंकि वो नंबर 1 आर्म रेसलर ऑफ इंडिया होगा. तो इसमें जो बेस्ट आर्म रेसलर्स हैं हिंदुस्तान के, वो सब हमारे इवेंट में फरवरी 14 को खेलने आ रहे हैं. दे आर गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, और हम चाहते हैं कि 1-2 साल के अंदर हम ग्लोबल भी जाएं और फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पे आना शुरू करें. बिल्कुल 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 nice. And also one more thing that I wanted to know, that arm wrestling is like not you you have given chance to the specially abled people. So regarding that, something which you would like to say? उनका वो भी एक पार्ट है हमारी सोसाइटी के. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है इंक्लूसिव होना. सो हमारा जो ये लीग है, इसके अंदर चाहे आदमी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे स्पेशली एबल्ड हो, सबको सेम अमाउंट मिलता है. So there is no discrimination of any kind just because if you are lady or you are specially able. सबको मौका देना चाहते हैं because they also are very much a part of society, and just because you have physical disability, आप ये सोचिए कि उनकी हिम्मत देखिए. हमारा तो काम कम है कि उनको लाना, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए कि फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए फिर भी वो इस स्पोर्ट में लगे हुए हैं. हर स्पोर्ट में जो आप कह सकते हैं, पैरालंपिक्स हो या जो भी हो, कितनी मेहनत उनको और भी मेहनत करनी पड़ती है. सो आई थिंक इतना दर्जा देना तो बनता ही है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड मैम, लाइक विमेन, अगर विमेन की बात करें, विमेन एम्पावरमेंट, तो आपका क्या कहना है? आप लाइक कुछ आप मोटिवेट करना चाहेंगे उनको थ्रू दिस वीडियो, टू ऑल द विमेन आउट देयर फॉर फिटनेस and for who are participating? Yes, of course, surely. I think this is one thing that women should not let go of. I think women get too consumed either with their work or with their house or anything that they're doing. We tend to get very consumed with it. तो हम अपनी पूरी strength और ताकत उसमें डाल देते हैं. चाहे अगर हम हाउस वाइफ है तो हम उसी काम में, या हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो आई थिंक we must always take out some time for ourselves. और वो 1 या 2 घंटा जो भी आप निकाल सकते हो, हमेशा अपने लिए निकालना चाहिए. अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या सिर्फ अपने आप के साथ बैठना चाहते हैं, तो वो टाइम अपने लिए जरूर निकालना चाहिए. इट मे बी एक्सरसाइज, इट मे बी एनीथिंग that you feel relaxes you. So you must take that time out for yourself, and I think that is what refreshes you, and you're able to perform all your duties much better. Yes. So lastly, I would just like to know for our viewers and your fans, some health tips for them, like for fitness tips. Last, like the secret mantras which you guys follow. मैं कुछ चीजें बोलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कोई भी सुनेगा नहीं और फॉलो नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करना. व्हाइट राइस खाना बंद कर दो, ब्लैक या रेड राइस. गेहूं खाना बंद कर दो, या तो ज्वार या बाजरा या नचनी, वो आप खा सकते हैं. और चीनी, कोई भी शुगर की चीजें चाहे हफ्ते में सिर्फ 1 बार हो चलेगा, लेकिन अदरवाइज खाना बंद कर दीजिए. और इतने सारी चीजें हैं,
जिनके अंदर चीनी है, आप पढ़िए जो लेबल, हाँ जो मीठी है, जो लेबल आप पढ़िए कुछ भी खरीदने से पहले। चीनी खाना कम कीजिए, गुड़ जो है, गुड़ खा सकते हैं, रेजन्स, डेट्स खा सकते हैं, अगर आपको कुछ मीठा खाना हो फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन ये बाकी चीजें खाना कम कीजिए, और थोड़ा सा जितना भी कम हो सकता है वो कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। जी जी बिल्कुल। ओके सर, सो आई थिंक हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। दैट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइस, and we're really looking forward for the event on 14th of February. So we'll just watch it and enjoy it at the same time. Thank you so much for joining. Thank you so much. Bye bye.